फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए दो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन खबरें हैं हमारे पास। पहली, विराट कोहली विल बी प्लेइंग द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग फ्रॉम December 26। और दूसरी, इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन टीम को मात दे दी है। यस, इंडियन वुमेन्स टीम हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम बाय 8 विकेट्स इन द वन ऑफ टेस्ट इन मुंबई। सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम ताउस रिजवी, साहिल मल्होत्रा और चेतन नरूला के साथ। तो ताउस भाई, स्टार्टिंग विद यू, एक बहुत ही बढ़िया गेम हुआ है, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। अमोल मजूमदार के जो स्टिंट जो स्टार्ट हुआ है टेस्ट क्रिकेट में इंडियन वुमेन्स टीम के साथ, वो एक बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस विन? अरे एब्सोल्युटली ग्रेट यार। आई मीन लुक एट दिस, कितने टाइम बाद हमको मौका मिला है वुमेन्स को कि टेस्ट क्रिकेट खेले। उनको मतलब दे हार्डली प्ले टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट फ्लैनल्स में। दे हैव बीन यूजुअली प्लेइंग ओडीआईज एंड टी20। उनका सारा फोकस इस पे रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, आईसीसी का या बीसीसीआई कहेंगे। दिस इज ब्यूटीफुल यार, कमिंग बैक टू बैक इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना। और दोनों टीम्स, माइंड यू, दोनों टीम्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट आपस में तो एटलीस्ट खेलते रहते हैं और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्रिकेट दे प्ले। और एलिसा हिली ने भी आज शायद बोला कि वी नीड मोर टेस्ट मैचेस। और एक्चुअली अगर ये सीरीज 3 टेस्ट मैच की होती ना तो बहुत ज्यादा मजा आता, कॉम्पिटेटिव एज देखने मिलता। वन ऑफ इज क्वाइट लाइक इनकम्प्लीट सीरीज लगती है, बट देन एट द एंड यू हैव वन द टेस्ट सीरीज 1-0 इंग्लैंड को हराने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को। दैट फील्स गुड यार, दैट फील्स सच अ ब्यूटीफुल ये। एंड स्पेशली आई मीन, ठीक है, प्लेइंग एट होम, winning back-to-back games, and then coming all-round performance with the batters भी किए, bowlers भी contribute किए, but you know एक satisfaction कब मिलता है जब आपका सीरीज जब होता है 3-0 हो रहा है या 2-0 हो रहा है। 1-0 थोड़ा इनकम्प्लीट दिखता है मुझे, तो I wish the series should have been longer यार, थोड़ा मजा आता, इनको भी बूस्ट मिलता। I mean the crowd, अब थोड़ा सा पार्ट खुला था गरवारे का तो फुल हो गया। तो अगर और थोड़ा प्रमोशन टेस्ट क्रिकेट को मिले ना, मजा आएगा यार, देखने लायक रहेगा कि यार इंडिया क्या परफॉर्म करता है, कैसे यू नो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। So moving on, Sahil, एक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया वुमेन्स टीम ने। नाउ इट्स अ बिग टेस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन वुमेन्स टीम खेलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 26 दिसंबर। लेकिन उससे पहले बिग न्यूज़ इज विराट कोहली विल बी प्लेइंग दिस टेस्ट। वो सारा एयर आपने क्लियर कर दिया था कल भी एक लाइव सेशन में, लेकिन मैं आज चाहूंगा व्यूअर्स के लिए आप पूरी एक जो टाइमलाइन है वो बताएं प्लीज। No, I think there was never any confusion on Virat's participation for this test. I think where kind of plot became slightly more serious was when the fact that it was said that it's a family emergency, personal reason, emergency, where a lot of things were being said. But we got clarification from a very well-placed BCCI official who was aware about the entire Virat's itinerary about how he's going to and when he's going to reach South Africa, and his England trip, London trip, which was in between during the South Africa training period. He left for South Africa from India on December 15th. He stayed there for 3 days. He left from South Africa to London on December 19th. And all this happened in a very planned manner. It's not that he woke up one fine day and said, boss, I'm going to London, so I won't be playing the inter-squad game, which was scheduled from December 20th to December 22nd in Pretoria. He was never going to play that game. Yes, he was named in the squad according to the BCCI press release, which named multiple squads for the tour of South Africa, but he had communicated his travel plan and he got the nod of the management and the people who matter in the BCCI that he'll be taking that break of 3-4 days. And he's joined the side, and he was pretty much in action today at Centurion, where he was practicing with the rest of the test squad. So this was probably their first session ahead of the Boxing Day test, where the entire squad had assembled, because abhi se pehle some of them were occupied with the ODI team, and it wasn't a completely full packed training session. So it happened today, and I think they're prepared pretty well. They have been in South Africa since 15th or 16th of December. Most of them played that inter-squad game. So Virat Kohli not playing this test was never a big question mark. He was always going to play that, and we all know the kind of commitment he has shown towards the longest format, and it was just a matter of time of him turning up, for that practice session today. And now all those doubts and rumors have been put to rest, and he'll be
pretty much in action at number 4 for India on December 26th. बट ये ऑल ऑफ अ सडन ये हवा चली कहाँ से कि ये फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो चले गए, लाइक हाउ डिड जस्ट, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस हो गया था मैटर उस समय. वी आल्सो थॉट दैट दिस समथिंग सीरियस बिकॉज वी हैवंट सीन विराट जस्ट लीविंग अ टूर इन बिटवीन एंड गोइंग बैक टू हिज होम. तो ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? No, so it wasn't कि मतलब कोई rumor आया था या कुछ आया था. Yes, he did. I think couple of publications did carry this news that he has left the squad, and which was a worthy news development that your star batter is leaving the squad midway. So there was some confusion there, and I think it could have helped had the BCCI issued a simple press release or a statement clarifying that, clarifying the travel plan. I think they leave some room for speculation. That shouldn't always be the case. अगर आप बाहर के boards देखो, अगर Pat Cummins जैसे जब medical emergency के लिए when he went back home during the Border Gavaskar Trophy, I think the dialogue was pretty clear from Cricket Australia. मतलब आपको कोई नहीं कह रहा कि आप specifics में जाओ, but at least just put a word out that the player is traveling back and he'll be joining on so and so date. So वहाँ पर सारा confusion could be put to rest then, and I don't think इतना confusion होता जितना अभी ये create हो गया. But it wasn't a family emergency, touchwood, and all is fine when it comes to his family and everything. And I think from what I'm hearing, his wife and daughter are also accompanying him to South Africa for this tour, and he was already practicing today. So no doubt about that. Yeah. Okay, Chetan, Exactly, I don't understand why the BCCI leaves that room take a comment for from speculation. I think ताउस भाई सिर्फ उसका बात नहीं करूंगा मैं. आप अगर मोहम्मद शामी वाला एपिसोड देखो, ऋतुराज गायकवाड़ वाला देखो, ये मतलब मल्टीपल, दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स. इसके अंदर कोई स्कूप भी नहीं ढूंढते हम जर्नलिस्ट. वी जस्ट चेज बेसिक्स. आई थिंक एक बेसिक मशीनरी शुड बी पुट इन प्लेस. अब शुभमन गिल वाला डेंगी वाला एपिसोड अगर आप याद करेंगे, मतलब उसमें कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि वायरल है, डेंगी है. चेतन तो हमारे साथ चेन्नई में थे तब भी, मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट अ ऑफिशियल वर्ड आउट. एंड आई थिंक द ओनली डेंगी कन्फेशन और द वर्ड डेंगी only came when Shubman Gill himself came for a presser, और उसके बाद राहुल द्रविड़ ने कैलकाटा वाले गेम में before the South Africa game he mentioned that how it took a toll on his body. So ये तो बहुत बेसिक चीज है. मतलब इसके अंदर कोई आपका मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं मांग रहा बॉस, या बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट नहीं मान रहा. These are like basic things. I think यहाँ पे we can do much better as a cricket board, and we should kind of not leave so much room for speculation. ये basic चीजें हैं. Yeah. Okay, so moving on from that front, Chetan bhai, Virat की जो white ball form है, that has been pretty good in this year. How do you see this? Can he replicate this in these two test matches? Because ये WTC के हिसाब से बहुत important है और ये विराट के लिए बहुत important series होने वाली है. Yeah, obviously he can replicate it. Will he replicate it? That is a different question. White ball form is very, very different from red ball form. Yeah. So yeah, whether he does that, that's a different question. Can he do it? Yes, he can, because he is Virat Kohli, or he has done that so many times. But I think this is a very different Virat Kohli we are seeing in his latter career. So yeah, I'm not sure he can. Just depends on the conditions that will be on offer, the kind of bowling attack. I think white ball is very, very different in terms of, especially when it's being played in India, being played in subcontinental conditions. Yeah. So yeah. And where do you think, Soumya, one second. I think there's a very important comment to take, because Mr. Ravi Shankar Kumar wants to know whether we published a fake news. No, Mr. Ravi Shankar Kumar, we did not publish a fake news. We still stand by our story. Whatever we wrote last night, we stand by it. We stick to it. And I continue to reiterate the fact that it wasn't a family emergency which Virat Kohli went for. It was a personal trip where reportedly he synced up with his wife, who was already in London. So there is no family emergency, because again, reportedly she has accompanied him to South Africa as well. So there wasn't any fake news. And अगर कोई आपको doubt रहेगा, you can reach out to me on Twitter in a very dignified manner, not in the manner where people are chasing me since last night. So इज्जत से सवाल पूछो, इज्जत से जवाब दूंगा यार. And it's not a fake news. It's not a fake news, and you can go to cricketnice.com and search the news there. वहाँ पे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आपके पास. ओके, कमिंग बैक, चेतन भाई, इस लाइनअप को अगर आप देखें यहाँ पे, बिकॉज आई आल्सो हैव अ कमेंट हियर, more or less now the batting is sorted, with Virat being there at 4, he'll be playing the 2 test. Introspect is asking, please tell what will be the bowling lineup for India, who is primed to play Mukesh or Prasad, 2 spinners or just 1. We have talked about it, but if you can just throw some light on that again. It just depends. हमने पहले भी बात की थी. It just depends on the kind of conditions that are going to be on offer.
From what I understand, it's not exactly dry, because yeah, at this time of the year, Centurion isn't dry. थोड़ा सा रहता है. It just depends कि किस तरीके के conditions रहते हैं. Centurion के टेस्ट मैच में आपको एक दिन तो बारिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी. There's no doubt about it. If obviously if it lasts 5 days, so that's the kind of weather you have over there. It's an open ground. It's a very beautiful ground. गेंदबाजी अगर कहें तो मैं खिलाऊंगा 3 फास्ट bowlers and 2 spinners. यहाँ पे वही बात है कि आप who's your first choice spinner? It's not Jadeja. For me, it's not Jadeja. Jadeja, जब भी आप overseas जाते हैं, he is an all-rounder. He's a spin bowling all-rounder. He has to be seen in that way. He's not your leading spinner. He's not your lone spinner. He cannot play those roles. क्योंकि जब तक ball turn नहीं होगा, he's not going to come into action. The same चीज oval में हुई, और people can go on and justify it in any way they want, but you can't pick a test team for just the first innings or just the second innings. So Ashwin has to play as the first choice spinner if you're playing 4 pacers. अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आपको 4 पेसर खिलाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं. जहां आपके पास 3 पेसर हैं, वहां पे आपको चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर 3 पेसर खिला रहे हो और आपको चौथे की जरूरत पड़ रही है, तो यानी आपने टीम गलत चुनी है. ठीक है. Unless it's an out and out फास्ट बॉलिंग पिच, और रेजर जैसे हमने पर्थ में देखा है, जैसे हमने वॉन्डरर्स में देखा था 2018-19 में. सो अनलेस इट्स लाइक दैट, आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने की जरूरत ही नहीं है. सो आई थिंक बुमराह, प्रसिद्ध एंड सिराज शुड डू द ट्रिक, एंड देन यू प्ले अश्विन एज योर स्पिनर एंड यू प्ले Jadeja as your spin all-rounder, who boosts the batting a bit. The choice should never be between Shardul and Ashwin. The choice has to be between Shardul and Jadeja. The more we prolong this debate, the more the team management prolongs this debate. आप रविचंद्रन अश्विन की disrespect कर रहे हो. Just look at the way Australia treats Nathan Lyon. They are never going to, on a pitch like this, they are not. Anyhow, he's there. Yeah. They are not going to debate whether Ashwin should be your 4th spinner or not. ये सवाल नहीं है कि Jadeja is there. Jadeja है तो आप देखो ना, you identify what Jadeja is. Jadeja is a spin bowling all-rounder, especially in overseas conditions. He's not your first choice spinner. Yeah. ताउस भाई, आपका क्या कहना है? You think we should go in with 2 spinners? ये तो हमने उस दिन ही बात किया था. We should go in with 2 spinners, and of course Ashwin should be the lead one, and the choices should be between this guy, Shardul Thakur and Ravindra Jadeja. But I would go for Ravindra Jadeja because last time हमने यही बात किया था. Mostly dry wicket होना चाहिए. Conditions अगर ज्यादा swing और ज्यादा green tinge रहा wicket पे, तो I think Shardul will be a decent choice. Won't be a bad choice actually. तो इसमें अगर देखेंगे तो Jadeja should get the edge यार, because he's got that, at least एक variety आ जाएगी. spin में at least आपके spin attack में एक तरफ से अश्विन, दूसरी तरफ से शार्दुल. Then you have some good bowlers in Prasidh Krishna, Jasprit Bumrah. We know what he did in the last tour. Mohammad Siraj, of course we are missing Mohammad Shami. So I think the picture is clear right now. But then अगर conditions क्या overcast conditions हो गए, तो आपको तब at the end like वेदर क्या कह रहा है, अगले 4-5 दिन फिर ओवरकास्ट रहेंगे, विकेट कैसी रहेगी, फिर जाके आपको फाइनली कप्तान रोहित शर्मा को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है. बट आई विल गो फॉर अश्विन. विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जैक्टली, क्योंकि आपने बहुत टाइम उसको अवॉइड किया है, बहुत टाइम स्नब किया है, इग्नोर किया है. जब नहीं करना चाहिए था, WTC से आपने लेसन लेना चाहिए था अभी तक. आई थिंक दैट इज द बेस्ट लेसन, एंड वी शुड गिव importance and respect to what Chetan has been saying. Give respect to our Ashwin. As far as Virat is concerned, यार, I think मुझे तो लगता है यार Virat का South Africa connection बहुत अच्छा है यार. उनका relationship, he has got 300 यार, and he enjoys batting in these conditions. I'm sure he'll continue his red white ball, दोनों फॉर्म कंटिन्यू करेंगे. वेस्ट इंडीज में भी अच्छा ठोका था, यहाँ पर भी मुझे लगता है साउथ अफ्रीका में बड़ा एंजॉय करेंगे. बट देन opposition है ना, मुझे I think opposition is much tighter this time. They are looking really good. The fast bowlers I'm talking about, Marco Jansen, they have more variety compared to the last one. Yeah. But साहिल, यहाँ पर अगर विराट की मैं बात करूँ तो do you think यहाँ पे थोड़ा सा added pressure हो सकता है विराट और रोहित दोनों पे, because you don't have रहाणे and you don't have a पुजारा.
It's a young side, kind of a, शुभमन बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट अभी नहीं खेले हैं, जसवेल इज जस्ट कम इन, और तो इन दो प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है। आई थिंक अगर आप लास्ट एक साल की बात करेंगे, अभी अगर आप बैटिंग डेप्थ की बात करेंगे, यू हैव समवन लाइक अ केएल राहुल हु इज लाइकली टू कम एट नंबर 5 और नंबर 6. That was your biggest problem in the last few test matches, because you didn't know whether you will play Ishan Kishan or a KS Bharat. You were not sure with Ishan's batting ability during that Australia series. Then you wanted KS Bharat because he's a much neater keeper. That didn't quite turn out because he was very clumsy behind the stumps in the opportunities he got during the Border Gavaskar Trophy. But right now, I think last एक साल की अगर आप बात करेंगे, batting unit looks much more sorted. You don't have that baggage of Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane. See, both of them have done a lot of wonderful things for the Indian cricket team, but the stage of the career where they were, I think उनके अंदर एक desperation आना बहुत natural था, desperation to perform. But these youngsters, someone like Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Shreyas Iyer is still young when it comes to Test cricket. आई थिंक वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, वेस्ट इंडीज दौरा मिस किया था, डब्ल्यूडीसी फाइनल मिस करा था वो बैक इंजरी के चलते. सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल लाइक यशस्वी, पीपल लाइक Shubman Gill, all these players, they're good players of short bowling. I'm not saying Shreyas Iyer, क्योंकि ट्रोल हो जाऊंगा उस बात पे, बट अगर आप स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर आप गेम देखेंगे, whether it's Shubman Gill or Yashasvi Jaiswal, they are gun players when it comes to playing square of the wicket. So it's a good opportunity for them. And जो अभी bowlers का हम डिबेट कर रहे हैं, आई थिंक टीम कैन एक्चुअली लुक टू बीफ अप देयर bowling and not go the शार्दुल ठाकुर way, because right now you have proper batting till 6. You don't have a wicketkeeper batter like Ishan who wasn't tested in this format, or someone like a KS Bharat who was still finding his feet in red ball cricket when it comes to test cricket. अभी आप 6 नंबर तक आप प्रॉपर बैटिंग खिला रहे हो. अगर 7 पे जडेजा खेलता है, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में जडेजा कहीं नहीं जाने वाला, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, उसको ये लोग खिलाने वाले हैं. आई थिंक वो जो चेतन ने कहा, यस ही इज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, आई थिंक दे वांट टू मोर देन हिज बॉलिंग. और अभी आप लेफ्ट हैंडर अगर आप देखेंगे, केवल एक ही है, और केशव महाराज, if he plays, then you need a left-hander in the mix, and it's always good to have a left-hander in the mix because you can move him up and down the order. But वो भी कहो ना, अभी मतलब ऐसा लगता है यार शार्दुल भी टीम से कहीं नहीं जाने वाला. जितना ट्रस्ट शार्दुल पे टीम मैनेजमेंट ने दिखाया है, especially overseas assignments के अंदर, and the way he was back to the hilt during the World Cup too, just to get that batting depth. I'm not saying Ravichandran Ashwin isn't a good batter. He's also a very good batter. He has got hundreds in this format. But वो call मतलब एक दिलेरी वाला call होगा इस time. Like अभी management जैसा है चलती हुई आई है ना. Yeah. Because some connectivity issue with Sahil. जितना हमने इनको देखा है वर्ल्ड का कॉल लग रहा है. However, yeah, am I back? Can you hear me now? Yeah, I can. Can you just repeat what you said? Yeah, so I'm saying I think the bigger call would be who to play between Prasidh Krishna और मुकेश कुमार, क्योंकि ये दोनों ही रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट. और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब मुकेश को शायद एज मिल सकता है क्योंकि वो बॉल अच्छा करता है. प्रसिद्ध इज मोर हिट द डेक बॉलर, थोड़ा सीम मूवमेंट पे रिलाई करने वाला, एट टाइम्स कैन बी erratic, बट मुकेश आई थिंक इज बेटर सूटेड दैन व्हाइट बॉल क्रिकेट इन रेड बॉल. जितना हमने उसको फॉलो करा है, ही इज अ मच बेटर रेड बॉल बॉलर देन ही इज विद द व्हाइट बॉल. सो आई पर्सनली फील मुकेश कुड गेट दैट नॉड अहेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा. वरना वो बाकी वो स्पिनर वाला कॉल तो लॉटरी है. मेरा फीलिंग जिस हिसाब से जितने लोकल रिपोर्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि कपल ऑफ डेज शुरू के बारिश का फोरकास्ट है. तो जैसे ये ऊपर का आसमान देखकर इन्होंने डब्ल्यूडीसी फाइनल के अंदर कॉल ले लिया था अश्विन को बिठाने का, कोई बड़ी बात नहीं, वो दोबारा हो जाएगी. अश्विन का यार रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है साउथ अफ्रीका में. क्या 50-52 का एवरेज है. ही हैजंट रियली डन वेल when it comes to bowling there in South Africa. So I don't know which way the management would go, but I have a feeling कि शार्दुल को जगह मिलेगा और वो 8-9 तक ये बैटिंग करने वाले हैं, शार्दुल और जडेजा तक. In fact, I have a comment here from Kuldeep, which is last time Ashwin took 2 wickets in Centurion, and one of them was Keshav Maharaj. But Sahil, थोड़ा सा मैं और इस चीज पे आपसे बात करना चाहूंगा. We can go with that orthodox thinking of a test cricket कि जहाँ पे आप एक ऑफ स्पिनर, प्रॉपर ऑफ स्पिनर खिलाना चाहते हो, एंड ठीक है 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हो, लेट्स गो इन विद द 3 पेसर्स, कोई भी कंडीशंस हो. व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक वो मैनेजमेंट का कॉल है. उनको 20 विकेट लेना है. अगर उनको लग रहा है उनकी 20 में से 15 विकेट या 14 विकेट आपको मीडियम पेसर दे सकते हैं, जिसमें शार्दुल इंक्लूडेड, बिकॉज ही हैज दैट नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स. आई थिंक वो कहीं से भी विकेट दे देता है आपको, 1-2 विकेट तो दे ही देता है. सो अगर वैसा
माइंडसेट मैनेजमेंट का है, क्योंकि आपको विकेट चाहिए ना अल्टीमेटली, 20 विकेट यू नीड टू विन अ टेस्ट मैच, राइट? सो आई थिंक वैसा माइंडसेट जब मैनेजमेंट बैठता है तो दे थिंक वेयर विल माय 15-16 विकेट्स कम फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू सब कॉन्टिनेंट, तब तो नो ब्रेनर है यार, अश्विन खिलाओ, जडेजा खिलाओ, कुलदीप भी डाल दो, अक्सर भी डाल दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट बाहर जाके आई थिंक द कॉम्बिनेशन, द बैलेंस कम्स इनटू पिक्चर, एंड I don't know, yeah. Bumrah is coming after a long time into Test cricket. I think it's like a rebirth of sorts for him. Having started his journey in South Africa only, if I'm not wrong, coming here after a long layoff, how his body will react, whether he'll be able to bowl like 20-22 overs in a day. So all those things will be taken into account. इसीलिए मुझे लगा थोड़ा पहले टेस्ट मैच में तो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, कीपिंग द फोरकास्ट इन माइंड, शार्दुल आ सकता है और मुकेश और प्रसिद्ध के अंदर कॉल रहने वाला है तीसरा सीमर का। Okay. I'll just move back to the batting bit, चेतन भाई, और यहाँ पे एक यंग साइड्स आ रही है बैटिंग यूनिट की, अगर मैं बात करूँ, पर टॉप 5 में से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ रोहित और विराट है, सो इज इट गोइंग टू बी एन एड प्रेशर ऑन बोथ ऑफ देम? It should be, because उस दिन भी हमने बात की थी कि they haven't taken an additional batsman, so they don't really have any option. आपके पास जो भी है आपको वही खिलाना है, ठीक है, अभिमन्यु ईश्वरन है, but he doesn't add bulk to the squad, which has been the problem with India, that their selection committee hasn't done well enough. So yeah, from that aspect, I think जो दारोमदार रहेगा वो ज्यादातर रोहित और विराट पर ही रहेगा. You don't have the seasoned batsman anymore. This is where I think Shubman Gill has to step up. आपने डिमांड करके लिया है नंबर 3 कि मुझे नंबर 3 पर बैटिंग करना है, तो यानी आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए थे टीम के अंदर, जहां पे टीम मैनेजमेंट ने आपकी बात सुनी. Now is the time to show it. I think while there'll be a lot of pressure, तो मैं नहीं कहूंगा, a lot of responsibility on Rohit and Virat, and there's always a lot of responsibility on the two of them, so there's not going to be much different as such. लेकिन I think शुभमन और श्रेयस पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप almost a decade India is moving on, and this time we are moving on. So it's been almost a decade since Pujara and Rahane haven't been part of India's test lineup. So जो नए प्लेयर्स आते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनको वो करके दिखाना होता है. मुझे याद है मैं 2013 में जब साउथ अफ्रीका गया था, it was just the end of India's golden era. Sachin Tendulkar had just retired. Rahul Dravid भी जा चुके थे, लक्ष्मण भी जा चुके थे, गांगुली तो उससे पहले ही चले गए थे. So you had a whole new batting lineup. You were going to South Africa, and ठीक है, Pujara had been there before, but he batted at 5. So he was going to bat at 3, Virat at 4, Rahane at 5. So this was going to be Rahane at 6, I think. Rohit batted at 5. I think Rahane had 100 in that series. I think first few hundreds of his came in South Africa. He had 100. So he had a 90 and he had a 90. 100 was in Wellington. He had a 90. 1911? Yeah, I think 1911. Yes, one of the hundreds yeah, he had a 1911. My point is कि first day of the test match, the pressure was on Pujara and Virat, Rahane, all of them to perform, and India was put in, and I still remember जब उन्होंने first day बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग की थी, there were a lot of leads, अच्छे से बॉल छोड़ा, and the next day the newspapers were front page headlines where they were praising Pujara and Virat. So the pressure is on the players who are coming in to replace those big name players. The pressure is on Gill. आपको नंबर 3 चाहिए था, आपको नंबर 3 मिल गया है, वेस्ट इंडीज में आपने कुछ नहीं किया, and आपको अब करके दिखाना है, and it's not going to be like the West Indies where the ball is not coming onto the bat. Here the ball is going to come onto the bat, but एक additional problem होगी, the ball is going to move around, which I don't think should be that big a problem for Shubman Gill, but if he gets settled, I think he will enjoy batting in South Africa. सेंचुरियन पे बॉल इतना मूव नहीं करता है जितना केप टाउन में करेगा या जितना वॉन्डरर्स पे कर सकता है. It is precisely the kind of wicket that Prasidh Krishna would like, where the ball just seams around a bit and you need to bang the ball. So Sahil का जो कॉल था कि मुकेश ahead of
Prasidh, that's not right, because Prasidh ke liye exactly the kind of pitch where Prasidh will, Prasidh will enjoy bowling. So the movement is not going to be too much. So Shubman Gill can enjoy that. Shreyas Iyer, again, he will be tested with the short ball. No doubt about it. How he plays it, that's different. But yeah, I think Gill and Iyer, how they perform is probably going to define the series for India. Yeah, yeah. Tausir, do you think on the same lines? Is it an opportunity slash pressure for Shreyas and Gill on this tour? Because of course they are filling the big shoes. अपॉर्चुनिटी है, ये प्रेशर क्यों होना चाहिए? आई डोंट बिलीव यार। सी प्रेशर, चाहे वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप प्रेशर लेने लगेंगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं यार? आप रिस्पांसिबिलिटी ले, आप परफॉर्म करे जाके डिलीवर, आपको इससे बेटर मौका आप यहाँ पर नहीं करेंगे तो आप कहाँ करेंगे? आई मीन दिस विल सील योर प्लेस। या और बहुत सारे, फॉर एग्जांपल शुभमन गिल, ही इज डन इट इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज डन इट इन इंडिया, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। तो मतलब एवरीवेयर यू हैव टू, this is the series exactly South Africa where Ajinkya Rahane made his name from your 96 or 51 जब स्टार्ट्स बताए। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट गेन करते करते इंग्लैंड, वेस्ट, न्यूजीलैंड हर जगह जाके परफॉर्म किया। तो वैसे ही शुभमन गिल, फॉर इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस गाय, और मे बी यशस्वी जायसवाल। प्रेशर आई डोंट बिलीव यार। प्रेशर रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपका काम है, ये आपका जॉब है, आपको जाके वहां पर डिलीवर करना है, चाहे विकेट्स जल्दी जाए या देर से जाए, आपको आपका रोल कंप्लीटली प्ले करना है। और व्हाट एवर द कंडीशंस आर, विंड कम्स, बाउंसी, सीमिंग, आई मीन दैट इज योर, आपको पैसे भी मिलते हैं, साथ साथ आपको वो आपका गेम का लव है और आपका प्रूव करने का एक ये है कि भाई एवरी टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन टेस्ट क्रिकेट or maybe whatever format, you have to keep on going. And Shreyas Iyer, yeah, another opportunity to rub off that debate, वो खत्म ही करने का कि मैं बाउंस के सामने नहीं खेल सकता हूँ, बाउंस मुझे खेलने आता है। वो थोड़ा एक ये है मसला जो मुझे लगता है कि आई थिंक श्रेयस शुड बी वर्किंग राइट नाउ इन द नेट्स। ये तो आई डोंट नो क्या रहेगा फिर उसका, अगर ऐसा चले ही विल बी एक्सपोज्ड। तो आई वुडंट लाइक दैट, क्योंकि मुंबई का है तो आई वुड ट्राई टू पुश हिम एज मच एज वो खड़ूस प्रेशर यार, एंजॉय करो यार गेम यार, टेस्ट क्रिकेट है, आपको कहाँ सबको थोड़ी मिलता है, 140 करोड़ लोग हैं, just go and enjoy it, don't take the pressure. Yeah. Lastly, Sahil, I just want to ask you one last thing. After that World Cup final, बहुत सारी बातें हुई हैं. How important this series and this WTC is for Rohit Sharma, the captain, not the batter. Batter वो perform कर लेंगे. The captain Rohit Sharma. Yeah, I think I said in one of the shows earlier, Srini was there, Chetan was there. I don't think Rohit has been tested that much when it comes to test captaincy. I think the biggest test was in the Border Gavaskar Trophy, where like captaincy thoda out of equation ho jata hai kyunki wahan pe pitches do most of the talking, right? So I think this is going to be a really challenging assignment for him as test captain. It's a short series, and I think the flip side, or I would say the disadvantage of a short series for a visiting side, is you don't have much room to bounce back. So I think that is going to be the biggest challenge for this Indian cricket team, क्योंकि एक बार आप पीछे लग गए तो पीछे लग गए, फिर वहां पे मतलब कमबैक का चांस बहुत कम रहता है. और in the past we have had good outings in South Africa, but it's that we haven't just gone all the way. I think last time around also under Virat Kohli's captaincy, which was his last assignment as test captain, we looked good in that series, but it was just that at the wrong time we weren't able to press for that accelerator, or we just couldn't get enough runs on the board. We had a good bowling attack back then too. So it will be important for Rohit to kind of क्योंकि अभी नया टेस्ट साइकिल है, आपने अच्छा स्टार्ट कर लिया है वेस्ट इंडीज के अंदर, और ये बहुत चैलेंजिंग टेस्ट साइकिल है. इसके बाद इंग्लैंड 5 टेस्ट के लिए आ रही है, फिर आई थिंक आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 5 अवे टेस्ट के लिए. सो बहुत चैलेंजेस है यहाँ पे. 7 टेस्ट मैच तो 12 में से आप बाहर खेल रहे हो, नेक्स्ट 12 में से, तो चैलेंज तो बहुत हाई रहने वाला है बॉस. इट्स अ हाई स्टेक सीरीज, और यहाँ पे इफ यू लाइक ड्रॉप क्रूशियल पॉइंट्स, देन इट विल अफेक्ट योर चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द WTC फाइनल. So I think it is a big test for Rohit, the test captain. मतलब अभी there hasn't been a lot of sample size to kind of make a reading of how good a captain he is in this format. No doubt about his credentials in the white ball, but I think test ball, रेड बॉल के अंदर अब ये सीरीज के अंदर आपको एक अच्छा एक स्नीक पीक मिलेगा इनटू रोहित द रेड बॉल कैप्टन, जो मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जितना सीरीज रहा है उसके अंदर ऐसा कोई मतलब कैप्टनसी एलिमेंट वाला अभी तक ऐसा आपको कोई मौका लगा नहीं. तो अब साउथ अफ्रीका के अंदर कैसी आप टीम खिलाते हो. 2 ब्लंडर हो चुका है बॉस, एक रोहित से भी हुआ है, मतलब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अंदर जहां आपने अश्विन को बिठा दिया था. और आज भी मैं घबरा गया जब राहुल द्रविड़ ने बोला कि ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे फिर कॉल लेंगे. अब ये सिर्फ ऊपर ही ना देखते रह जाए, जैसे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में सिर्फ ऊपर थोड़ा बादल देख कर रह गए थे. सो मतलब ऑल दीज थिंग्स
these are the big calls which a captain needs to take, and it starts from the playing 11. So अब वो कैसा call लेंगे, क्या composition रहेगा squad का. It's a big challenge for Rohit, the test captain, and I'm like eagerly waiting to see how he kind of performs as test captain. Batting to chhod do, wo to kar lega. वो तो He कर has लेगा, done वो तो well. कर He did well in England too. So I think लेगा। this as captain maza aayega dekhne mein, because it's a different thing to rotate three spinners and and then when you have to rotate like four seamers or three seamers, so wo how good captain you will be, wo maza aayega. It will be a Yeah. good fun for us. चेतन भाई आपका क्या कहना है? हाउ एक्साइटेड आर यू और व्हाट डू यू वांट टू हाउ विल यू जज रोहित द कैप्टन इस सीरीज के हिसाब से? व्हाट वुड बी दैट दोस प्लीज हो थिंग्स? जाने दो, फिर जज करेंगे। ठीक है, बट व्हाट आर सीरीज यू जज कर लो यार। टेस्ट तो है। I don't agree with Sahil that कि उसकी कैप्टनसी हम जज नहीं कर सकते हैं। When the ball is turning that way, आपकी कैप्टनसी स्किल बिल्कुल has to be on the point, क्योंकि एक गलत मूव आपने की and match is gone, which we saw in Indore. I think his captaincy was on point. Obviously आपको judgment करने के लिए इतना नहीं मिलेगा because he hasn't really led so much. He's not, ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ there's been an 18-month period जहाँ पे India has played a lot of test cricket and Rohit has been captain throughout that 18-month period. नहीं, बीच में injuries थी, बीच में rest था, बीच में ये था, बीच में वो था. So you just have the Border Gavaskar Trophy and the World Test Championship literally. और कुछ है नहीं आपके पास जज करने के लिए. So there's not much, but in that series he was on point. मैं ये नहीं कहूँगा कि you can't judge it. It was not like कि उसको कुछ आता नहीं है. He was on point. जहाँ पे एक जगह पे he got the decision wrong and India batted wrongly, match was gone. So ऐसी सीरीज में जहाँ पे बॉल ऐसा स्क्वायर टर्न कर रहा होता है, you have to be, आपका जो margin of error है, that goes down immensely. You can't make wrong calls at all. आपके bowling changes have to be on point. कब अक्षर को लाना है, कब जडेजा को लाना है, कब अश्विन को लाना है, it has to be on point. किसको कहाँ बैटिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है. I think a lot of this Pujara change has come from Rohit after that Indore test match especially. He was not happy with the way Pujara was batting, not giving the impetus that they really wanted. World Test Championship mein, again they picked the wrong team, so yeah, there's not much to say there. If they continue picking the wrong team, then we will have a lot to judge about Rohit's captaincy. So we don't have a lot of evidence to judge it, but he was pretty much on point. He played a magnificent 100 in Nagpur. A lot of people forget that. That was a really bad pitch. Batting is never a question. Batting, of course, we're not questioning the batting. There's always a question when Virat is involved. The captain, is involved. So the question is always there when Rohit Sharma, the captain, is also involved. Let's not go there. So yeah, let the series happen. I think what we need is, like Sahil said rightly, कि इस World Test Championship में we do not have the luxury of a major home series towards the end of the cycle. आपको 25 में वो major home series नहीं मिलेगी जहाँ पे आप उसको जीत के आप World Test Championship के final में पहुंच जाएंगे. I think India is playing Bangladesh next year at home, New Zealand at home, then they're going to Australia. They're also playing England at home. Sorry? England, Bangladesh. England, Bangladesh, England. New Zealand. Yeah. England, Bangladesh, New Zealand. We have 10 test matches at home. So, साल मार्च में नहीं खत्म हो जाएगा सौम्या. No, I'm saying I thought you missed out the England bit. Yeah, England सबको पता है. I'm just talking about the entire year. So उसके बाद I think they're going to Australia. I don't think Australia series के बाद they're playing a test series at home. I think they may be playing Sri Lanka. I'm not sure. I think ODI ज्यादा रहेंगे क्योंकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा चालू रहेगा. I think मैं sure I have it written down somewhere. I'm forgetting it, but yeah, 25 में they're only playing 4 tests at home. I'm not sure what the scene is. South Africa खेल रही है 2 test matches I think 25 में. So I think they have 2 test matches against Sri Lanka after the Australia series. But anyway, 2 test matches is not against Sri Lanka is not going to take your percentage high. Unless it's a 4-match series or a 5-match series. तो जो भी, that's the point. जो भी आपको करना है, आपको अभी करना है. You can't leave it. India has to make sure they're already in the top 2 before they go to Australia. If they're not going to qualify for the final. And then we'll be sitting and judging here कि आप World Test Championship के final में भी नहीं पहुंच पाए. So yeah, I think we don't have the evidence as much as we would like.
I think अगर रोहित की बात करें तो I don't think there's much left in his career. Ironically, he'll have to rely on red ball cricket to be remembered as a great captain. So I don't see him. Obviously, he's not going to lead in ODIs. He's not going to lead with T20s anymore. So yeah, I think the only chance he has is the 25 World Test Championship. Yeah. चलिए, let's just hope we have a balanced squad and दोनों टेस्ट मैचेस जीत के पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि WTC फाइनल तभी पहुंच पाएंगे हम जब ये पॉइंट्स मिलेंगे. Well, thank you gentlemen for joining this live session and thank you for your insights. Thank you. Bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.